Hello everyone, I'm Priyanka. I'm back again with my new chapter that is The Roadside Stand, and this poem is written by Robert Frost. So let's have a quick overview about the poet. Robert Frost was born on 26th March 1874 and died on 29th January 1963. He was an American poet. वो एक American poet था. He was born in San Francisco and lived there until the age of 11. वो सैन फ्रांसिस्को में उसका जन्म हुआ था और वो वहाँ पे तब तक रहा जब तक से वो 11 साल का था. In 1911, in an attempt of attack attention to prominent and influential member in the literary world, he moved with his family to England. उसके बाद 1911 में वो अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड मूव कर गया. There he befriended Ezra Pound, who helped publish and promote his work. वहाँ पे जाके वो Ezra Pound से मिला जिसने उसकी हेल्प की पब्लिश करने में और प्रमोट करने में उसकी कामों को. Okay. रॉबर्ट फोर्स रिटर्न टू यूनाइटेड स्टेट्स इन 1950. अब रॉबर्ट फोर्स जो था वो वापस से यूएस आए 1950 में एंड बाय 1920 वाज एन एस्टैब्लिश पोएट और 1920 में बहुत ही एस्टैब्लिश पोएट बन गए एंड वन न्यूमरस प्राइजेस. उसे बहुत सारे प्राइजेस भी मिले. इंटरेस्टिंग इन रीडिंग एंड राइटिंग पोएट्री अबाउट द यंग एज. Frost attended Harvard University in Boston but never earned a degree. उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बॉस्टन की ज्वाइन तो की बट उन्हें कभी भी डिग्री नहीं मिली. He was awarded the Bolgin Poetry Prize in 1963 and 4 Pulitzer Prize. He was honored with an invitation to read the poem in the inauguration of John F. Kennedy as a president. Now, what is the theme of the poem The Roadside Stand? The poem A Roadside Stand is a poet plea for consideration for simple people of the countryside, those who live those lives have shown no progress. वो उन सब लोगों की लाइफ दिखाना चाहते थे जिनकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है. He expresses his pain at the sadness. वो अपना पेन शो करते हैं उनके सैडनेस के लिए, सॉरोज के लिए, सपोर्ट करना चाहते हैं उनको. He hoped someone would work unselfishly for their rehabilitation. वो चाहते थे कि कोई उनके लिए बिना किसी सेल्फिशनेस के उनकी मदद करे. He brings out the wide disparity between the haves and have-nots with petals clarity and humanity, and seems to suggest that economic well-being of country dependent on balanced environment in village and cities. Now, the summary of the poem. The Roadside Stand portrays the poor country people whose earnest desire is rise above the wickedness. They attempt to do this by putting up roadside stand and trying to sell whatever they can improve their lives. वो उन सब लोगों, उन सब पुअर पीपल को पोर्ट्रे करते हैं जो जिनकी डिजायर होती है बस कमाने की ताकि वो अपना गुजारा कर सके. जब आप देखते हो रोड साइड बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं अपनी चीजें बेचने के लिए ताकि वो अपना लाइफ स्टाइल इम्प्रूव कर सके. बट द सिटी पीपल जस्ट स्पीड अप देयर कार्स एंड डू नॉट इवन नोटिस देम. लेकिन जो शहर के लोग होते हैं वो उनके पास से कार्स में एकदम स्पीड से गुजर जाते हैं, उन्हें नोटिस तक नहीं करते हैं. And do not even notice them, and when they do it with irritation at having spoiled in the landscape light and badly written sign. और अगर वो उनके पास आते भी है, वो गरीब लोग उनके पास कुछ बेचने आते भी है तो बहुत ही बुरी तरीके से जो रिच पीपल रहते हैं वो उन्हें धुतकार देते हैं. Frost, where epitome portrays the country people anger to selfishness of the city dwellers, for all they want is to attain the standard that they have been promised to them in movies, but which feel in denied to them in present government. बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट बनने से पहले वो लोग बहुत सारी प्रोमिसेस करते हैं, जैसे मूवी में प्रोमिसेस करते हैं, उससे बहुत सारी प्रोमिसेस करते हैं कि वो पुअर पीपल के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. लेकिन जब वो गवर्नमेंट बन जाते हैं, जब वो प्रेजेंट गवर्नमेंट करंट में चल रहे होते हैं तो वो कुछ भी नहीं करते हैं. They do not want charity, and poet make it very clear that the donors actually running their lives by calling them so-called benevolent people greedy and beast for prey. They move them in countryside to live near theaters and shop and encourage them to live an idle life. वो सोचता है कि वो लोग कंट्री साइड में मूव कर जाए और वो लोग थिएटर्स या शॉप के पास रहे ताकि वो अपने लाइफस्टाइल को और ज़्यादा इनकरेज कर सके, which will take away peace and wits. The poet feel pain of seeing the country people intense longing for better life. वो उन्हें देख के बहुत उसके बुरा लगता है कि लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए. उनका सैडनेस देख के उसे बहुत बुरा लगता है. When not even one car stopped to inquire about the goods they are selling. जब वो लोग रास्ते में कुछ बेच रहे होते हैं तो कम से कम एक कार भी उनके पास नहीं आके रुकती ये पूछने के लिए कि वो लोग क्या बेच रहे हैं.
The city dwellers are projected as being involved in their own life and thought of anyone else. जो सिटी के लोग रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में बिजी रहते हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं. The poem shows the heartless of the city dwellers. पोएम शो जो पोएट है वो ये शो करने की कोशिश करते हैं कि जो सिटी dwellers है वो कितने हार्टलेस है, उनके पास दिल नहीं है. Through the poet insane desire to put an end of country people so that they could be relieved from their complaint about the lack of upliftment to their lives. The poem ends with a poet remorse at their feelings when he realized how he could feel if someone were to try to end his pain in the same way. So, एंड इन द एंड ऑफ द पोएम जो पोएट्स रहते हैं वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो फीलिंग है कैसा लगेगा कि जब उनके साथ अगर लाइफ में कभी कुछ ऐसा होगा तो उनको भी यही पेन फील करने का ज़रूरत होगा, यही पेन उनके लाइफ में भी होगी. सो ये एक छोटी सी समरी थी कि कैसे सिटी ड्वेलर्स रहते हैं, वो पुअर पीपल पे ध्यान नहीं देते हैं, लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं, जो रोड साइड चीज़ें बेचते हैं सिर्फ अपनी लाइवलीहुड को कमाने के लिए. सो दिस वॉज अ स्मॉल समरी ऑफ द चैप्टर द रोड साइड स्टैंड. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू.